फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, और सर को 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और 11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस सर का है फॉरेंसिक साइंस में। सर ने एमएससी आईआईटी से किया है, रुड़की से, और सर पीएचडी है जेनेटिक्स में। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सर आज हमारे साथ आए हैं और हमें टाइम दे रहे हैं फॉरेंसिक साइंस इस सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए। सो वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच कि आज आप जुड़े हैं हमारे साथ। थैंक यू मैडम। सर मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगी कि एक्चुअली क्या होता है कि हम जैसे लोग जो होते हैं जिनके आसपास कोई फॉरेंसिक साइंटिस्ट नहीं है, या जिन्हें इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इनका एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है टीवी सीरियल्स, या फिर जैसे वेब सीरीज़ होती है। आजकल एक बहुत फेमस वेब सीरीज़ आई थी असुर, वो पूरी फॉरेंसिक साइंस पे डिपेंडेंट थी। CID तो एक बहुत लंबा शो रहा है, उसमें डॉक्टर साड़ू के हमारे रेफरेंस थे। तो सर पहला तो मेरा यही सवाल है कि एक टीवी सीरियल या एक मूवी से एक रियल फॉरेंसिक साइंटिस्ट की लैब या काम कितना अलग या सेम होता है? यस एक्चुअली ये अच्छा सवाल। मूवी या सीरियल्स में क्या होता है कि वो लोग अक्सर एक किसी साइंटिस्ट को सभी का एक्सपर्ट दिखा देते हैं, और जैसे कि आपने CID सीरियल में देखा होगा या किसी और भी जगह भी एक एक्सपर्ट होता है, वो हर एक फॉरेंसिक क्वेश्चंस का जवाब देता है, जबकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में किसी CFSL या FSL में आप देखेंगे तो जैसे यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी लाइक आपको DNA एक्सपर्ट या बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट, जिस तरह की क्वेरीज होती हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज, 3 मेजर डिविजन्स में डिवाइडेड है लैब, और एज पर क्वेरीज दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू देयर सब डिविजन्स लाइक एक्सप्लोजिव केमिस्ट्री, बैलिस्टिक्स, or cyber, digital forensics. So we have various divisions and various experts. Single person is not working for all. ओके ओके, तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। और सर लैब में Yes. भी अलग अलग सेक्शंस में काम होता है, इसका मतलब? Within lab, yeah, we can say like there is 3 major categories जो मैंने बताया। जैसे बायोलॉजिकल साइंसेस है या फिजिकल साइंसेस है, केमिकल साइंस है। तो बायोलॉजिकल साइंसेस में अगेन पहले फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉरेंसिक सीरोलॉजी, देन फॉरेंसिक DNA, 3 है। ऐसे ही केमिकल साइंसेस में जैसे केमिस्ट्री, नार्कोटिक्स, देयर आर डिफरेंट एक्सपर्ट्स फॉर ईच ऑफ देम। लाइक केमिस्ट्री का अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, नार्कोटिक्स के अलग एक्सपर्टाइज है। Then there are explosive, that is also broadly part of chemical sciences, but it is a different branch, and explosive expert is separate from other divisions. In the same way, ballistics, the physical sciences, that is again like physics, ballistics, and digital forensics, like that. And as per queries from forwarding authorities or as per requirement of the case, the exhibits are deposited to the different sections, and we examine and submit our report. ओके सर, ये जो आपने कहा कि अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं, तो अगर कोई क्राइम सीन हुआ है जहाँ पर, क्योंकि जी क्राइम सीन में ही फॉरेंसिक साइंस का ज़्यादा यूज होता है, प्लीज़ करेक्ट मी अगर इसके कोई अदर यूजेस भी है, वो भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जनरली इसी के रेफरेंस में हमने फॉरेंसिक साइंस का नाम सुना है। तो जी ये मेरा क्वेश्चन है कि सिर्फ क्राइम में ये यूज होता है या और भी कहीं पे फॉरेंसिक साइंस यूज हो रहा है? क्राइम यानी जो भी लीगल केसेस हैं उनमें इसका यूज है, जो इन सॉल्विंग क्रिमिनल केसेस, और मेनली ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट है। दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एंड several crucial judgments are based on this report of experts. If a proper report is provided, judges or honorable courts feel quite relaxed and quite confident in giving their judgments. Especially, you're very well aware that DNA profiling is one of the gold standard in forensic evidences, and very well valid worldwide. Some famous cases you may have heard about, Andy Tiwari case or something like these. Even the president of USA, Bill Clinton ji, could not spare himself when the judgment was based on DNA profiling report. When DNA profiling report is there, nobody can manipulate things. Even in that, there are questions like how the samples were collected, and whether it is
properly. Some questions may always arise like, is there some manipulation in initial stage? Like if proper sample collection from crime scene is not there, then the doubt will create. And in such cases, right, even a strong DNA report can be of no use. Even we have seen that in some cases when honorable court found that they could not rely on the collection, exhibit collection time, whether they are properly collected by the IOs or something. If anything fishy appears, whole of forensic evidence can be neglected. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किस तरह से फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने काम किया है, बट किस तरह से वो एविडेंस लिया गया है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड हो जाता है। Yes, we are just one part of that whole process. राइट, Like samples were collected by either professional police persons or by the forensic medicine doctors. And if there is doubt, they are not maintaining proper chain of custody, or samples are not timely collected, especially suppose it case of sexual assault. If timely collection of samples is not there, then their value or quality will decrease. राइट, राइट, राइट। सो सर, ये जो फील्ड है, इसमें जो है आपको क्राइम से डील करना पड़ता है। डू यू डील विद द डेड बॉडीज ऑल्सो? क्योंकि जैसे हमने सीरियल्स में देखा है, दे एग्जामिन द डेड बॉडीज ऑल्सो। तो क्या ये भी एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट को करना पड़ता है? हाँ, ये एक्चुअली डेड बॉडीज को उस समय जब क्राइम सीन पे जो विजिट कर रहे होते हैं, मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट यूजुअली होते हैं, वो लोगों का काम होता है वहां से जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। ओके, Most of the districts have a mobile forensic unit, and they have one expert. Especially, it is desirable that one forensic expert should be there in heinous हाँ, crime cases at crime scene, and ओके, they will deal with the collection of exhibit from. They will guide. They themselves may collect and hand over to the police persons or investigative agency. But हाँ, like postmortem or collection or medical examination, this is work of a medical doctor, forensic medicine doctor, not a forensic scientist. So those samples are collected by authorized medical superintendent or whoever is authorized. Hmm. जी, And they seal and send to us for examination. ओके, ओके, ओके। सो यही होता है एक्चुअली, कोई अगर कहे कि मुझे फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना है, So तो सीवी में जो बताते हैं वो बहुत कुछ अंदर घुस जाता है कि हमें वो काम करना होगा। और फिर उसके बाद में नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल डूइंग दैट थिंग। सो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि वो कितना रिलेटेड है। we used to get part of those samples. Like if it is a dead body or a skeleton recovered from somewhere, we will get tissue material. We can get their tooth material for comparison with different their queries. Like they want to establish their identity first. So we have to compare for the sample DNA profiling sample with their relatives. All right, राइट, like there is mass disaster. Suppose हाँ, recently the this train accident was there, यस, Balasore यस, case. So in such cases, we have to prioritize to establish identity of the body. For that, ओके, we usually get a tooth sample or some body fluid sample from the deceased, and reference samples from the blood relatives of that deceased or claimant. Whole body, we are not dealing with whole body हाँ, usually. राइट, राइट, ओके। सो सर, एक अगर मैं ये पूछूं आपसे कि एक डेली रूटीन का कैसा डे होता है आपका, कैसे? Okay, it is just like any जी, government employee. Forensic scientists usually go at 9:30, 10. Usually labs are from 9:30 to 6. Our central ओके, labs are operating between 9:30 to 6. Same way, state labs 9 to 5 or something like that. And we work officially we work for 5 days, but as per requirement, we sometimes work on weekends also. Sometimes we require to work at beyond office hours also ओके, to deal with the pendency of cases if there. हाँ, हाँ, ओके, ओके। तो सर, मुझे ये समझना है कि जैसे हर प्रोफेशन के कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, आपका तो वैसे भी एक चैलेंजिंग ही प्रोफेशन है, क्योंकि आपको सिर्फ सैंपल मिले हैं, उसमें आपको बहुत कुछ खोज कर निकालना है। तो इट्स
ऑलवेज चैलेंजिंग, बट इसके अलावा और कौन से चैलेंजेस होते हैं जो आपको लगता है कि कॉमन नॉलेज में नहीं है, या जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनके लिए पहले से पता चैलेंजेस, नहीं है? सबसे पहला चीज होती है जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज या इस केसेस के लिए कि सैंपल कलेक्शन प्रॉपरली हो, जो कि काफी लोगों को अभी तक भी पता नहीं होता है। दैट लाइक इवन जो पुलिस पर्सन आर मोस्टली कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लेवल पर्सन हु आर रिस्पॉन्डिंग फर्स्ट, सो दे मस्ट बी ट्रेन्ड वेरी वेल and how to collect sample, how to store, and what kind of chain of custody, how to maintain that. Hmm. Like from collection till submission to the lab, that is their part. This is challenging if they are not collecting properly. And second, uh, timely collection, timely medical examination, especially in sexual assault cases. Suppose it is not reported timely, or medical examination is not conducted within stipulated time period, then chances of getting good quality of exhibit from there or quality evidence will be less. So the second, with जो additional challenges which we face in lab is continuous supply of consumables or something, because these are the things which are affecting also, as well as manpower requirement. Mostly our labs require sufficient. Nowadays it is sufficient by contractual employees or something like their government is providing us. But in most of the cases, for timely submission of report, we require adequate manpower also. And सो यू आर सेइंग नॉट एवरीवन इज वेल ट्रेन्ड, और उसकी वजह से आपका काम जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सैंपल उस तरह से yes, if कलेक्ट नहीं if होते। sample is not collected properly or chain of custody is not maintained, we cannot do anything. In that case, we can deal राइट। only for the aggregate which we are receiving, but we cannot go back and correct those mistakes. So we used to करेक्ट। train police persons also wherever we whenever we get chance. So in the form of publication or in the form of lectures, we used to give them training also whenever required, and police training राइट। schools or BPRND. सारे दर्शकों से एक बार कहना चाहूँगी कि सर ने हमें ऑलरेडी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इसके वर्क नेचर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, मगर फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझे Sure, कांटेक्ट कर I will. सकते हैं, या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर करियर काउंसलिंग नीड्स। आप सर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, सर का लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आज का ये पॉडकास्ट हमारे लिए सच में बहुत इंसाइटफुल था, बहुत ऐसी चीज़ें थी जो Thank you, हमें madam, for पता नहीं giving थी। me opportunity, and you're contacting me for this such kind of discussion. I feel good to make awareness among newcomers so that they should not face struggle later on. ये एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन जैसे आप हो, इनसे जब आता है तो लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और कैसे उन्हें इसके लिए जाना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच सर, Thank you. इतना टाइम हमें देने के लिए। Thank you. Always that.